Good evening, everyone. Let's go ahead with our class. Today, we will be going ahead with the aphorism number 57 and 58. We have been doing with the discussions regarding the therapeutic law. And in this discussion of therapeutic law, you can see there are many different avenues Henman has shown to every one of us. Purpose is to establish the concept of law of similia. The purpose is to make us all aware about what kind of treatments were in vogue, what kind of treatment have been pursuing, and what kind of effects, what kind of ill effects they were producing. And the most effective method was seen in glimpses, but could never be established as a way of treatment. The credit goes to Dr. Henneman that he established one such most salutary, successful way of treatment for the suffering humanity. There are in therapeutic law four methods of four modes of therapeutic law. Homeopathic, that is law of similia. The second one is allopathic. The third one is isopathy. And the fourth one is antipathy. From the last class onwards, we started with the antipathic mode of treatment, and today we are going to go ahead with this mode of treatment, which actually in couple of aphorisms, Henry is really doing a very elaborating discussion to make us understand and concluding, taking this mode of therapeutics, antipathy, to its logical end and decide that how far it is unsuccessful, when it is successful, what kind of harm effects, what are the differences with law of similia with antipathy, like this. So, in this aphorism 57, Henman is just telling us that what exactly is the mode of antipathy, what is their methodology of treating. So, let us just go ahead with the kind of method utilized in the antipathic mode of treatment. Henman says in the aphorism 57, in order to carry into practice this antipathic method, the ordinary physician gives for a single troublesome symptom, make it a point, single troublesome symptom from among the many other symptoms of the disease which he passes by unheeded. Among the many other symptoms of the disease which he passes by unheeded, a medicine concerning which it is known that it produces the exact opposite of the morbid symptom sought to be subdued, from which agreeably to the 15th century old traditional rule of antiquated medical school, contraria contraris, he can expect the speediest, in the bracket
palliative relief. This is the methodology of antipathy. And beyond this, rest of the aphorism is giving us some 5 examples of applying it. So, what exactly he is saying? He says that in any of the given case, patient has got many symptoms. Out of these many symptoms, the physicians of antipathy, they only give too much of importance to one very prominent symptom, and rest of the symptoms they passes by unheeded. They do not notice them while noticing. They do not care them. They only care the most prominent, most disturbing, most harming symptoms, most complaining symptoms of the patient. Like, for example, in the case of fever, they only give importance to the rise of temperature. But fever has got 3 symptoms: chill, heat, sweat. And along with that, in each stage, there are many constitutional or local symptoms, or both. But in fever, the importance is given to the very high heat stage symptom, and all are worried about it. And treatment is designed accordingly. So the point to understand is that they are only doing a symptomatic way of treatment, choosing one, the most prominent one, and finding out a remedy which is exactly opposite condition medicine has. A medicine which has a power to produce the exact opposite to that particular symptom, that medicine is prescribed in that case, which is showing its palliative magical result, but for a moment. But this is a method. The justification, good, bad, it is nice, it is to be done, not to be done, is leave aside. In this aphorism, Hahnemann is devoting the understanding of antipathy, that the way, the method they are utilizing. He is not judging, he is not giving any comment on that. He is not giving any judgment on the way of treatment of antipathy in this aphorism. Rather, he is telling that they pick and choose a symptom and they find out a medicine against that symptom. What is the method of choosing the symptom? The most prominent one, the symptom which is most harming, most difficult symptom produced in the patient, and they look for a remedy which is having a opposite, exact opposite to the symptom produced by the patient. And he has given the 5 examples. What are those 5 examples? The first example is regarding 3 medical symptoms, 3 conditions. One condition is pain. In case of pain, what they do, because pain is the most prominent feature of many illnesses, the most common complaint a patient is approaching to the doctor or to the hospital. So that pain, they are just giving something so that it is immediately going to be relieved. So what they do, antipathy method of treatment, since beginning, they are giving opium. Nowadays, opium is utilized, but it has got many different types and combinations and varieties of opium, or opium like other substances, which has got a power to benumb, to completely make your nerve insensitive to the pain. So one condition, pain can be due to many reasons, and in each case of pain you may find many other modalities and concomitants and other features. Even location is going to be very important in case of fever. But
In the antipathic mode of treatment, as Hahnemann told in initial lines, they only pick pain and they prescribe something exactly opposite. That opium is now producing something opposite, that is benumbing the nerves. Now, this is a very simple understanding in the time of Hahnemann. Now you have elaborate understanding. You can exactly know exactly what opium is doing in the internal operations of the vital force. So nowadays, so much of explanations are there regarding the effect of painkillers, which are nothing but opium or different derivatives of the opium or different other drugs which are like opium, which has a one power that how to benumb. So with this condition, they are doing a palliative method and which is also called antipathy. Similarly, there are medicines which are given to stop the diarrhea immediately. They are also opium and opium derivatives. And in the similar manner, if you are unable to sleep, you have insomnia. Again, various different derivatives of the opiums are used, or like opium drugs are used to those who are able to produce sleep. So these are the examples of antipathy. For sleeplessness, there are various reasons. But what are they doing? They are just doing one thing, that they are completely giving one such medicine which will make you sleep, because it is producing sleep in, say, it's proving or its effect on any healthy person or somebody who's trying it. So like this, there are one example in which Henmin covered three conditions, three symptoms. Then the second one is, there are patients, those who are suffering with constipation. What are they doing? They are giving in such conditions purgatives, exactly opposite, and it gives a very good palliative relief. That the tablet is in and the bowel is moving and removing the whole constipated stool out. So like this, they are using so many different varieties of purgatives in the name of Ayurvedic medicine, in the name of this tablet or that tablet, somehow or the other. Again, for that, they are using various purgatives. You cannot name one purgative, because in the medicinal arena, many purgatives are available. But does not mean those medicines does only have one symptom purgative that to produce diarrhea. But then it is, everything is ignored. The point to understand is they ignore symptoms. Since they ignore symptom, we sometimes get influenced with their method of treatment. We also start ignoring symptoms. The learning here is that we should not ignore the symptoms. Ignoring symptoms is something going to be very harmful if we are practicing homeopathy. We also give importance to the most prominent symptom, but we complete the symptom by its modalities, by its location, and by its concomitant. But as such, in antipathy, there is no such rule. They only pick such very prominent symptom and they apply the medicine which has got the exact opposite condition which it can produce, like this. So the next example is cold water for the burns. Most common. But then in the introduction by Hahnemann to the organon, he made us aware that doing such treatment, antipathic way of treatment,
is actually delays the healing, not really good for the patient suffering with the burn injury. Then somebody feeling chilly, he is given a warm bath, so that immediately you will get very soothing, warm, cozy experience. Similarly, for debility, if you feel weak, if you feel dull, you're so much of tired, you're feeling weak and dull, take wine. And you feel so much of energy in you. But then after that, if you wait for some time, by next morning, by next day, you feel extremely dull, more than what you were feeling earlier before taking the wine. So these are some 5 examples Henman made us to know that how they are treating the patient just simply by keeping in view the most prominent symptom. तो समझने की बात सबसे ज्यादा यही है इस अफोरिज्म 57 में कि एंटीपैथी मोड ऑफ थेरेपेटिक्स में किस तरह से इलाज किया जाता है, आखिर इनका तरीका क्या है, इनका मेथड क्या है, इनकी मेथडोलॉजी क्या है, वो हनीमैन हमको इसलिए समझाना चाहते हैं कि हम सही ढंग से बात को समझ सकें कि अभी जो हम पूरी एक थेरेपेटिक लॉ के बारे में 22 अफोरिज्म से बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत में हमको ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे स्लॉट्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो हनीमैन हमको दिखाना चाहते हैं, जिससे कि हम बात को समझ जाएं। कारण एक और भी है कि लॉ ऑफ सिमिलिया को इशारों में तो बहुत देखा गया, बट पूरी की पूरी हिस्ट्री में किसी ने भी लॉ ऑफ सिमिलिया को एस्टैब्लिश करके एक वे ऑफ ट्रीटमेंट, एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट प्रैक्टिस करने के लिए एस्टैब्लिश नहीं किया। जैसे कि हनीमैन पिछले अफोरिज्म में बता रहे हैं कि एंटीपैथी को एस्टैब्लिश किया 1700 साल पहले गैलन ने, बताया था हिप्पोक्रेटिस ने, एस्टैब्लिश किया गैलन ने। इसी तरह से लॉ ऑफ सिमिलिया बताया था हिप्पोक्रेटिस ने, बट हनीमैन से पहले किसी ने उसको एस्टैब्लिश नहीं किया, और हनीमैन ने उसको एस्टैब्लिश किया। अब सोचो, एक सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स, एक मोड ऑफ थेरेपेटिक्स 1700 साल से प्रैक्टिस हो रहा है, और उसकी भी एक बड़ी खास बात है, बड़ी खूबसूरती उसकी दिखती है बाहर से कि शुरू में तो बड़ा जल्दी फायदा दे देता है, जिससे कि सभी लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उससे उनको एक एफिनिटी हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छा इलाज है कि अभी गोली अंदर और दर्द गायब। तो ऐसी कंडीशन में, इस तरह की सिचुएशन में 1700 साल के आगे अगर होम्योपैथी पिछले 250 साल से ही इस्टेब्लिश हुई है, तो बड़ी ताकत हम सबको लगानी पड़ेगी। हनीमैन ने तो बहुत ताकत लगाई अपनी तरफ से, और बहुत अच्छे अच्छे काम करके हमको बताए, सारा एक्सप्लेनेशन हम लोगों को दिया। स्टैब्लिश करने के लिए हमको भी उनकी बात पे आगे चलना चाहिए। तो इस अफोरिज्म 57 के अंदर हनीमैन हमारे को यही बताना चाह रहे हैं। वो एक बात इस अफोरिज्म में कह रहे हैं कि इसके मेथड में, एंटीपैथी के मेथड में, जो भी एंटीपैथी प्रैक्टिस करने वाले फिजिशियन हैं वो क्या करते हैं, सिंगल ट्रबलसम सिम्टम को पिक कर लेते हैं। ऐसा एक सिम्टम जो सबसे ज्यादा दुख तकलीफ दे रहा है, वो दर्द हो सकता है, वो डायरिया हो सकता है, वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो जलन हो सकती है, वो बहुत कमजोरी हो सकती है। ऐसे करके वो एक सिम्टम को उठा लेते हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ, जो पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है उसको, और एक ऐसी दवा चुनते हैं जो कि उससे ऑपोजिट कंडीशन प्रोड्यूस करने की पावर रखती है, और वो उसको एक अच्छी डोज में और कई कई बार में देते हैं, और उसके अपने इफेक्ट से उस दवा के उस समय पे ऐसा लगता है जैसे कि जादू, पेशेंट को बहुत फायदा होता है। बाद में क्या होगा वो बात की बात है, बट उस समय पे एकदम जादू।
ये बताने के लिए, ये मेथड बताने के लिए हैनमैन ने यहाँ पर इस अफोरिज्म 57 में 5 एग्जाम्पल दिए हैं। उन 5 एग्जाम्पल में बहुत सारी कंडीशंस को कवर किया उन्होंने। क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस है कि उन्होंने बताया कि किसी को पेन है। पेन इसलिए आता है एक बार बार डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, अगर हम सभी लोग सोचें कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है या कोई भी दूसरे भी किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, उसमें से पेन का पेशेंट मोस्ट कॉमन होगा। चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो बैकेक हो, चाहे वो किडनी स्टोन का पेन हो, बट कारण बहुत सारे हैं, बट एक तरह से एक्सप्रेस होते हैं वो है पेन। अब इस पेन की कंडीशन के लिए उनके पास बहुत अच्छी एक ड्रग है एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, जो फौरी तौर पे उसी समय बड़ा ही पेलिएटिव मैजिकल इफेक्ट दिखाता है। बाद में क्या होगा, बाद में जो नुकसान होगा बात की बात है, बट सबसे पहले तो दिखाई देता जादू। क्या जादू दिखा देता है कि आपने किसी तरह का एक ओपियम या ओपियम का कोई डेरिवेटिव या ओपियम जैसा कोई और ड्रग, अब बहुत सारे ओपियम जैसे ड्रग भी आ गए हैं। हैनमैन के ज़माने में ओपियम ही सबसे ज़्यादा जाना जाता था पेन हटाने के लिए, बट ओपियम जैसे अब और भी ऐसे ड्रग्स आ गए हैं जो कि पेन को हटा देते हैं। क्या करते हैं, वो आपकी नर्व्स को, जो आपकी सेंसरी नर्व्स है जिससे आपको पेन का ज्ञान होता है, उसको एकदम से विनम कर देते हैं, उसको सुला देते हैं। वो सेंसेशन ही कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता है। तो आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ आपको पेन हो रहा है? और जब ऐसा होता है, जो कि कुछ समय के लिए ही होता है, बट आपको एक बारी तो ये लगता है कि बड़ा अच्छा हो गया। इसी तरह की कंडीशन होती है कि कोई पेशेंट को डायरिया हो गया, बड़ा सीवियर, बहुत सीवियर डायरिया हो गया, रुक नहीं रहा है, हम कैसे क्या करेंगे, तो वो जल्दी से एक ऐसी दवा देते हैं, क्या, ओपियम जैसी दवा देते हैं। ओपियम उसका कोई डेरिवेटिव देते हैं। उसे क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो इतना फास्ट हो गया है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो एकदम बिनम हो जाता है, सो जाता है, और वो ऐसा लगता है जैसे डायरिया रुक गया। आज हम हैनमैन की भाषा में इस सारी बात को जब समझते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे बड़ी प्रिमिटिव सी बात हो रही है, लेकिन बात यही है। एक्सप्लेनेशन बहुत एडवांस तौर पे कर दी गई है कि वो इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ दी वाइटल फोर्स की एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी गई है। एक्सप्लेनेशन बहुत पैथोफिजियोलॉजिकल हो गई है। एक्सप्लेनेशन को बहुत अंदरूनी तौर पे किस तरह के केमिकल रिएक्शंस एंड चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, उस तरह से बता दी गई है। बट बात सिंपलेस्ट फॉर्म में यही है। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट है ऐसा जिसको नींद नहीं आ रही, क्या दे रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर नाम आपको पता लगेंगे, ये दवा वो दवा, बहुत सारी दवा, बट अल्टीमेटली क्या है वो ओपियम, ओपियम का डेरिवेटिव या उसके जैसा कोई और सब्सटेंस जो आप में इंड्यूस करता है स्लीप को, आपके अंदर स्लीप को बढ़ा देता है, आपकी इस चीज को इंड्यूस कर देता है। तो ये 3 सिम्टम के बारे में ओपियम को लेकर बताया है मैंने। तो आप समझ सकते हो कि कितना मिसयूज्ड ड्रग है ओपियम। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि हम जब कोई पेशेंट आता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन, जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, जब कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, मेरे पास एक जब पेशेंट कॉन्स्टिपेशन लेके आता है, तो मैं उसके कॉन्स्टिपेशन में उसका कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम खाली नहीं देखता हूँ। मैं ये भी समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर इसको 1 साल, 2 साल, 4 साल से कॉन्स्टिपेशन है, इसका मतलब ये 20 साल का व्यक्ति 16 साल से ठीक था। उसको कभी भी किसी तरह की असिस्टेंस नहीं चाहिए थी इस बात के लिए कि उसको स्टूल पास हो जाए। अगर ये 4 साल से हुआ है कुछ ऐसा इसके साथ, तो ये ढूंढने की कोशिश तो की जाए कि क्या है, कैसे है, क्या बात हो गई, कैसे हो गया ये सब कुछ, और भी इसके साथ में क्या सिम्टम्स है और किस तरह का कॉन्स्टिपेशन है। हम सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स इस तरह से ढूंढ के ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम खाली कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम को पकड़ के एक दवा दे दें, एंटीपैथी में कैसे करते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, परगेटिव दे दो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि नेचर में परगेटिव्स बहुत सारे नोन है। परगेटिव का मतलब ऐसी दवाएं जो आप में डायरिया इंड्यूस कर देती हैं, एक किस्म का डायरिया पैदा कर देती हैं आपके अंदर। ऐसी दवाएं बहुत हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी दवाएं बहुत खोजी गई। क्यों खोजी गई? क्योंकि शुरू से ही पिछले करीबन 2500 सालों से ये विचार था कि हमें
बीमारी ढूंढनी है अंदर जो कि मेटेरियलिस्टिक है, और उसको हमने बाहर निकालना है। तो बीमारी बाहर निकालने के क्या मोड हो सकते हैं? आपके बॉडी के ऑरिफिसेस से तो बाहर निकालोगे। तो बहुत अच्छा मोड क्या था? वॉमिटिंग करा दो। बहुत अच्छा मोड क्या था? डायरिया प्रोड्यूस करा दो। तो डायरिया प्रोड्यूस करा दो के बारे में खोज बहुत हुई। जब बहुत खोज हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं से बहुत सारी दवाइयां पर्गेटिव और वॉमिटिंग करने वाली ढूंढ के निकाली। तो जहां सवाल ये पैदा होता है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसे पर्गेटिव की जरूरत है, तो बहुत सारे नाम के पर्गेटिव्स आते हैं, तो वो पर्गेटिव्स दे दिए जाते हैं। और एक बारी तो ये होता है ना कि पेशेंट ये चाहता है कि मेरे को स्टूल पास हो जाए, तो भाई आपके पास एक गोली है, आपने दी और वो देखो जी स्टूल पास हो गया उसको। ऐसा एंटीपैथी के अंदर बड़ा क्विकली होता है, ऐसा बहुत क्विकली होम्योपैथी में भी होता है, लेकिन वो तो स्टैब्लिश ही नहीं हुआ सिस्टम। वो सिस्टम कहाँ स्टैब्लिश हुआ? हिप्पोक्रेटिस ने लॉ ऑफ सिमिलिया भी बताया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया भी बताया। सिचुएशन ऐसी हुई जो कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि गैलन जो कि दोनों बात जानता था, लेकिन अपने बचाव के लिए उसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। जब उन्होंने लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया तो वो एक तरह से सिस्टम ही स्टैब्लिश होता चला गया। और उसको स्टैब्लिश हुए 1500 साल, 1700 साल। यहाँ पे कहीं हैनमैन ने पहले अफोरिज्म में 1700 साल बोले हैं, ये वाले अफोरिज्म में 1500 साल बोले हैं। कोई डिफरेंस होगा उसमें, वो मेरे को अभी जानकारी नहीं है। वो मेरे को जानकारी होगी तो मैं आप लोगों को भी उसके बारे में बताऊंगा कि ये डिफरेंस ऑफ द ईयर क्यों कहना चाहते हैं। जहाँ तक मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ कि किसी चीज को शुरू करने में और इस्टेब्लिश करने में एक समय लगता है, तो शुरू करने का टाइम हैनीमैन शायद 1700 साल बताना चाह रहे हैं, और वो एस्टेब्लिश हो गया है उसको 1500 साल कहना चाह रहे हैं मे बी। और इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है, वो मेरे को खोजना होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्होंने यहाँ पर इस तरह का एक सिस्टम ही इस्टेब्लिश कर दिया कि लॉ ऑफ सिमिलिया की बात ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन लॉ ऑफ कंट्रेरिया को गैलन मिल गया। और उस समय का मतलब आप समझिए कि गैलन जैसी पर्सनैलिटी और रोमन्स के जैसा एक साम्राज्य मिला, उस तरह का एक ऑरा मिला जिसमें उसने डर दहशत से बचने के लिए ये करना शुरू कर दिया, और वो सिस्टम ही स्टैब्लिश हो गया। लेकिन ना ही कोई ऐसा कोई ऑरा डेवलप हो पाया, ना ही कोई ऐसा एरा आ पाया, ना ही कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ पाई हैनीमैन से पहले जो लॉ ऑफ सिमिलिया जो कि ग्लिम्पसेस में दिखता था, जो कि इशारों में दिखता था, उसको एक सिस्टम के जैसे स्टैब्लिश कर दिया जाए। शायद हैनीमैन को ही ये सौभाग्य लिखा था, हैनीमैन के ही नाम ये क्रेडिट लिखा था, तो उनके ही आने पे ये हुआ। लेकिन हमारा हैनीमैन के आने से अब तक जो भी 250 साल हो गए, तो ऐसे इतने से छोटे से समय में जो कुछ भी हम लोगों ने किया है, और हमें बहुत सारा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे उनकी तो वैसे ही टाइमलाइन 1700 साल, 1500 साल, 2500 साल है, और हम सिर्फ 250 साल है। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमारे को बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजों के साथ में जूझना होगा, क्योंकि इतने 2 सेंचुरीज के अराउंड के टाइम में उन लोगों ने अपनी गलत बातों को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करा लिया। अपने गलत कामों को, अपने गलत मेथड्स को भी उन्होंने एक किस्म से एक यूनिवर्सल नियम बनवा लिया, जिसको सब एग्री कर रहे हैं बाय एंड लार्ज। उसी को साइंस कह दिया गया आज के जमाने में। और हमारी सही बातों को भी हम इंस्टीट्यूशनलाइज करा नहीं पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़े रोड ब्लॉक तो हम खुद हैं कि हम ही आपस में एक मत नहीं है, हम ही एक पेज पे नहीं है, हम ही एक जैसी बात नहीं रखते हैं। हमारे में ही बहुत सारे फैक्शंस हैं। मैं सिंगल रेमेडी मानता हूँ, कोई डबल रेमेडी मानता है, कोई पेटेंट मानता है, कोई किसी तरह का मेथड मानता है और कोई किसी तरह का मेथड मानता है। तो हमारी ही बहुत सारी डिवीजन है। तो कैसे स्टैब्लिश हो, ये बहुत सारी बातें हैं। ये तो हैनीमैन के ज़माने से ही शुरू हो चुका था, इस तरह का डिवीजन हम लोगों के अंदर। इसलिए हमें और भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कोई भी हमारे पे क्वेश्चन रेज कर देता है, इसी वजह से इतना अच्छा सिस्टम होते हुए हम खुद अपने ऊपर सिस्टम क्वेश्चन रेज करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। हमें खुद को ही लगने लगता है यार शायद हमारा नहीं ठीक होता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समय और हमारे काम, इन बातों पे ये बात निर्भर करती है। तो ये 5 एग्जाम्पल और ये उनकी मेथडोलॉजी।
ये हमारे को ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरीके से एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट इतने डेप्थ के साथ आज खड़ा हुआ है। चाहे वो बहुत हार्म करता होगा या कुछ किसी तरह का फायदा भी देता होगा, जो कुछ भी बात है, बट फायदे से ज्यादा नुकसान है, ये बात तो हर कोई जानता है आज। उसके बाद भी लोग लुक फॉरवर्ड फॉर एंटीपैथी करने लगते हैं गिवन सिचुएशन के। तो बात ये समझ लेने की है कि ये जो मेथड है, इसकी मेथडोलॉजी जानो और समझो कि उनकी फैलिसीज क्या है, और उनकी फैलिसीज को अपने सिस्टम में लाने से बचो। अगर वो एक सिम्टम को इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे यहाँ तो पूरे सिम्टम स्टडी करने की मेथडोलॉजी है, तो हम एक सिम्टम को इंपॉर्टेंस देने का काम ना करें। हम एक सिम्टम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, हम तो टोटलिटी की बात करते हैं। हम तो जब एक पेन का पेशेंट आता है तो उसकी लोकेशन, उस पेन की सेंसेशन, उस पेन की मोडालिटीज, उस पेन के कंकॉमिटेंट, इन सब को खोजते हैं। जो मिल जाता है, सब मिलता नहीं है, सब होता भी नहीं है और मिलता भी नहीं है। तो जो होता है उतने में हम एक बात कंप्लीट करके एक ऐसी दवा देते हैं जो उसी जैसी कंडीशन को प्रोड्यूस करता है, और उससे बहुत रैपिड, बड़ा मैजिकल रिजल्ट होता है। आप सबने, मैंने, सभी ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा। और अच्छी बात यह कि वो पेलिएशन नहीं होता है, वो क्योर होता है, वो इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज होता है, वो हीलिंग होती है पेशेंट की। यहाँ पर वो वाली बात, हीलिंग वाली बात नहीं होती है पैलिएटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में। आप जानते हैं सब लोग यहाँ पर, बट हम एनिमल की बात को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो इस बात को भी हम जरूर जान समझ लें। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और एक बार 57 अफोरिज्म में हमको कहीं कोई अपेंडिक्स का रेफरेंस नहीं मिलता है, बट अगर हम जाएं तो हमें कंटेंट्स की टेबल जरूर कुछ कहती है 57 के लिए। 57 कंटेंट ऑफ टेबल: the method of treatment in which a remedy which displays an opposite action, contraria contraris, is prescribed for a single symptom of the disease, and examples. And I told you 5 एग्जाम्पल हैंडमैन ने हमको दिए। तो ये 57 की बात हो गई। चलिए अभी तो हमारे पास समय है, हम 58 को भी एक बार डिस्कस करते हैं। 58 अफोरिज्म को अगर हम सबसे पहले चलो टेबल ऑफ कंटेंट से ही देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं Aphorism 58: this antipathic procedure is not defective merely because it is directed against a single symptom of the disease only, but also because in persisting ailments, after it produces a short apparent amelioration, real aggravation ensues. तो हेनमैन यहाँ ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर वो इस एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ हम ये समझें कि कितना कारगर है, कितना इफेक्टिव मेथड है, कितना फायदेमंद है ये। तो देखने में ये आता है कि इसके 2 पॉइंट उन्होंने हमारे को कंटेंट ऑफ टेबल से बोले, फिर हम अफोरिज्म से भी पढ़ेंगे कि उन्होंने ये बताया कि सबसे पहला दोष तो इसमें यही है, जो कि इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन वो दोष तो है ही है कि आप सिर्फ एक सिम्टम पकड़ के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। बट इससे भी बड़ा और जो सबसे परेशानी वाला जो बात है, जो सबसे बड़ा दोष है, वो ये है कि इस ट्रीटमेंट को करने के बाद पेशेंट को थोड़े समय आराम आने के बाद उसकी वही तकलीफ की सीवियरिटी और भी ज्यादा हो जाती है, और इतनी ज्यादा सीवियर होती है कि वो पहले से भी ज्यादा सीवियर होती है कंडीशन, और फिर वो परसिस्ट करती है। तो इस तरह की कंडीशन जैसा कोई थेराप्यूटिक मोड कोई बहुत इफेक्टिव माना नहीं जा सकता है। ऐसा मोड ऑफ थेराप्यूटिक्स एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, खास तौर से अगर बीमारी क्रॉनिक नेचर की हो। आइए अब हम अफोरिज्म पढ़ के देखते हैं। अफोरिज्म 58 हमको क्या सिखा रहा है? वो हमें इस एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की फैलेसी के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? इफ
in estimating the value of this mode of employing medicines. What estimating the value? आप जब किसी का वैल्यू एस्टिमेट करते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं कि जैसे आप कुछ बाजार में खरीदने गए, वो जितने का मिल रहा है आप एस्टिमेशन करते हैं ना कि ये इतने पैसे का लगता भी है ये सामान। आपने कोई चीज 100 रुपए में अगर खरीदी तो आप ये तो जज करेंगे ना कि ये 100 रुपए लायक सामान दिखता है, वर्थ है इसकी 100 रुपए के बराबर। तो यही मतलब है यहाँ पर एस्टिमेटिंग द वैल्यू of this mode of employing medicines. We should even pass over the circumstance that it is an extremely faulty symptomatic treatment. First of all, ये एक symptomatic treatment और wherein the practitioner devotes his attention in a merely one-sided manner, एक तरफा सोच के साथ ये इसका फिजिशियन काम करता है। एक तरफा सोच के साथ। क्या एक तरफा सोच है कि एक सिम्टम पकड़ लो, जैसे कि हमने पहले वाले एफोरिज्म में भी बात। कॉन्सिक्वेंटली टू ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द होल, पूरे के पूरी होल का एक पार्ट को पकड़ लो, whereby relief for the totality of the disease which is what the patient desire। उससे क्या होगा कि कुछ उस प्रोमिनेंट सिम्टम में लाभ लगेगा, रिलीफ लगेगा, फायदा लगेगा, जो कि पेशेंट भी चाहता है। Cannot evidently be expected, we must on the other hand demand of experience if in one single case where such antipathic employment of medicine was made use of in a chronic or persisting affection, after the transient amelioration, this is what यहाँ पर estimation दिखा रहे हैं, transient amelioration that did not ensue an increased aggravation of the symptom which was subdued at first in a palliative manner, an aggravation indeed of the whole disease। उसके बाद वो पूरी बीमारी को बढ़ा करके खड़ा कर देता है। And every attentive observer will agree that after such short antipathic amelioration, aggravation follows in every case without exception। इटैलिक्स में कह रहा है, आप ऐसा नहीं समझे कि बस किसी केस में तो फायदा होता है, किसी किस केस में एग्रावेशन होता नहीं, ऐसा नहीं है। हर केस में विदाउट एक्सेप्शन एग्रावेशन होता है। Although the ordinary physician is in the habit of giving his patient another explanation of the subsequent aggravation and ascribe it to the malignancy of the original disease। कहते बीमारी ही ऐसी है, हम क्या करें, आप बीमारी ही ऐसी लाए कि अब देखिए इतना बढ़ के आया, अब इस बीमारी के लिए दवा तो वही है, इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम शोइंग इटसेल्फ और टू द अकरेंस ऑफ क्वाइट ए न्यू डिजीज, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई बीमारी अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इतनी बढ़ी हुई तो नहीं थी पहले तकलीफ। तो इस तरह से इसको दिखाते हैं। और मैं यहाँ पर एक फुटनोट दिया, इस फुटनोट में उन्होंने चार ऐसे रेफरेंसेस दिए हैं उस जमाने के वेल नोन डॉक्टर्स के, जिन्होंने हैनिमैन की इसी बात को ऑब्जर्व किया है। इस फुटनोट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने, हैनिमैन ने जो रेफरेंसेस दिए वो किसी दूसरी लैंग्वेज की किताबों से लेके एज इट इज लिखे, और डजन के ट्रांसलेशन में भी उन्होंने उसको एज इट इज लिख दिया। शायद ऐसा समझा गया कि इस वाली लैंग्वेज को थोड़ा बहुत तो सभी डॉक्टर समझते हैं, और उन अथॉरिटीज को तो हर कोई जानता था उस जमाने में, अब हम लोग नहीं जानते हैं। बट एक बहुत अच्छी बात है कि ओरियली के ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं है। ओरियली के ट्रांसलेशन में उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताया है, जो कि मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ता हूं तो आपको भी उसकी ठीक ठाक जानकारी रहेगी। तो हमको इस अफोरिज्म 58 के फुटनोट में 4 एग्जाम्पल मिलते हैं, और वो बता रहे हैं, मैं इस फुटनोट को पढ़ रहा हूँ, अफोरिज्म 58 का फुटनोट। Other writings about the aggravation resulting from
antipathic treatment. Little as physicians has hitherto been given to observation, the certain aggravation resulting from such palliatives could not escape their notice. उस जमाने के लोगों की ऑब्जर्वेशन से ये पोस्ट एमेलियोरेशन जो एक एग्रावेशन आ रही है, उस जमाने के हेनमिन के अलावा वाले भी जो बड़े वेल नोन एंड वेल अवेयर फिजिशियन थे, उनकी नोटिस से निकला नहीं. A striking example of this is to be found in J.H. Schulz. उनका एक डिसर्टेशन है, उसके अंदर उन्होंने इसको नोट किया, और उस डिसर्टेशन का अगर ये लैटिन में लिखा है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? डिसर्टेशन शोइंग सर्टेन केसेस ऑफ ब्रीफ ऑल्ट्रेशंस इन द ह्यूमन बॉडी. और उसका उन्होंने पेज नंबर वगैरह सारा कुछ कोट करके और फिर जो भी टेरिकल में लिखा है उसका उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन ओरियली में लिखा है. वो कहते हैं ओपिएट्स generally assuage the most severe pains and bring on insensibility, and they continue the insensibility for some time and for a fixed period. When that period has elapsed, the pain soon flare up again. दोबारा से वो पेन वापस आ जाता है कुछ हद तक रहने के बाद. And in short, order increase to their accustomed severity. तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, और इसी डिसर्टेशन में इसी ऑथर की इसी डिसर्टेशन के अंदर दूसरे पेज नंबर पे वो एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं. वो उसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ. व्हेन द ओपियम स्ट्रेंथ इज स्पेंट, जब ओपियम की ताकत खत्म हो जाती है, उसकी पावर इलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है एक समय के बाद में. हर दवा का अपना एक स्ट्रेंथ का टाइम है ना, उसके बाद वो पावर उसकी खत्म हो जाती है. स्ट्रेंथ इज स्पेंट, द इंटेस्टिनल पेन्स रिटर्न स्ट्रेट अवे, nor do they slacken their severity unless they are charmed away again by the same drug. फिर दोबारा से उसकी सीवियरिटी वापस आ जाती है, और वो तब तक रहती है जब तक कि वही ओपियम जैसी दवा को ज्यादा डोज में दोबारा नहीं दे दिया जाता. ये हैनमन ने खाली नहीं लिखा है, हैनमन ने साथ में इसके रेफरेंसेस दिए हैं जो हम पेन की बात भी कर रहे थे. इसी तरह से एक और बड़ा वेल नोन फिजिशियन है जॉन हंटर, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हैनमन ने कोट किया. In like manner, John Hunter on venereal diseases, page number 13, says that wine increases the active energy of weak people without imparting true strength. वाइन देने से उस समय के लिए कमजोर आदमी को ताकत महसूस होती है, लेकिन असल ताकत नहीं आती है. Afterwards, their vitality sinks. उसके बाद उनकी ताकत बहुत ज्यादा सिंक हो जाती है, बहुत ज्यादा ऐसा जैसे कि ताकत बिल्कुल ड्रेन हो गई है, खत्म हो गई है, ताकत है ही नहीं. As much as it was at first aroused so that they receive no advantage. In fact, vitality is for the most part lost. ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है जब वो उस वाइन के इफेक्ट से बाहर निकलते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि बार बार अगर उस वाइन को यूज करते रहे तो एक ताकत मिलने का सिलसिला भी, फौरी तौर पे ताकत मिलने का सिलसिला, शॉर्ट पीरियड के लिए ताकत मिलने का सिलसिला भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उस तरह का जो वाइन का इफेक्ट प्रोड्यूस करना है आपकी बॉडी के ऊपर, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता. तो इस तरह से हैनमन ने हमको अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ अपने जमाने में जो कि बड़े वेल नोन उस तरफ के एलोपैथिक साइड के फिजिशियंस थे, उन लोगों के यहाँ पे 4 रेफरेंसेस बताए हैं ये बताने के लिए कि किस तरह से इसका बैड इफेक्ट है. जस्ट टू सम अप, एंड आई विल सम अप इन द इंग्लिश दिस aphorism 58, that earlier in the aphorism 57 we came to know the methodology of antipathy, that they choose one symptom and they prescribe a medicine which is able to produce opposite effect on that symptom. Now 58, Hahnemann is giving an evaluation. Hahnemann is giving us an estimation regarding the value of this kind of treatment, this mode of treatment, this antipathy. What Hahnemann says, first of all, it is a single symptom treatment. It is a symptomatic treatment. This is the one very folly if you do such kind of treatment. And Hahnemann says his words are
in italics and are more powerful, what I can speak, Hahnemann says, it is an extremely faulty symptomatic treatment. Here, the practitioner, the doctor of this antipathy, is completely one-sided manner choose one single symptom which is most prominent, and he is giving a medicine against it. Against it means a medicine which has got a against effect, opposite effect. That is what antipathy is, you know. So when they are giving such kind of treatment, we must on the other hand demand of experience. If one single case where such antipathic employment of medicine was made use of in a chronic or persisting affection after transient, the most important thing what Hahnemann is going to assess, estimate here is that one very wrong thing is one-sided approach, just simply selecting one symptom and giving a medicine which has got a potential to oppose that symptom by its opposing power. And the second thing is, especially in the chronic conditions, patient, though initially feels that he is ameliorated, he is better, he has suddenly improved for a moment, but as soon as the effect of this palliative medicine going to be over, after that, and when using a word, he says, without exception, aggravation follows in every case without exception. And this aggravation is the most harmful thing regarding the antipathic mode of treatment. So, as we just learned in the table of contents, Hahnemann says regarding the Aphorism 58, the two things. One, that you are just treating symptomatic and only one prominent symptom. And above all, that initial feeling better, thereafter feeling worse without exception. This is what is the most harming part of antipathy, which cannot be accepted as a rule, a therapeutic mode for the suffering humanity. This cannot be the rule. Though it has become for last 1700 years or 2500 years. And the other thing is that in this aphorism 58, at the end, Hahnemann is noting one footnote. And in this footnote, Hahnemann has told us 4 references, which are the references of the books of the very learned physicians of those days of allopathy. But they also observed what Hahnemann has observed regarding the antipathic mode of treatment. I think I have read you that in English from the O'Reilly. You just get one copy of O'Reilly translation of the Ognon of Medicine. You can read it because the best thing is that O'Reilly has not only simply left it written in the other language, Latin language, but he has translated them there only in English, which Dudgeon has not done it. Maybe whatever may be the reasons, I don't know. But I read you about what O'Reilly has translated them in English, and we are very sure and understood that whatever is Hahnemann is saying has got a meaning. We all also can observe. So today, what we have done, today we have learned that regarding the antipathy, what exactly the methodology of antipathy, that is given in Aphorism 57, and wherein Hahnemann has explained the methodology with 5 examples, where he says this is a single symptom treatment. What single symptom? The most prominent single symptom. And in 58, Hahnemann has given the evaluation of the antipathic mode of treatment.
he has given us the fallacies of the antipathic mode of treatment. That one, it is a treatment which is just for one symptom, prominent one, and for a little relief when the effect of the medicine is over, it is producing so much of severe aggravation that you cannot really endure until and otherwise you utilize the same medicine in a more dose, increased dose. And he has seconded all his observations with the references of the uh, books and experience of the physicians of allopathy of those days in the footnote. Thank you very much for today. We will be continuing in our next class about the aphorism 59, which is nothing but going us to give us more elaboration about the antipathic mode of treatment with some, I think more than some 10 examples, some 16 examples we will be learning regarding the antipathic mode of treatment. So that we will be continuing this journey. Thank you very much, everyone, those who have joined. Thank you so much. Thank you, everyone.